So students, we are going to start with new chapter, that is chapter number 4, structure of atom. We have already learnt about what is an atom and a short brief of what atom is. Atom is the smallest particle and it carries three things. One is electron, proton and neutrons. Electrons are negatively charged, protons are positively charged, and neutrons have no charge. So this is what we have studied in previous chapter, chapter number 3. But in this chapter we are going to learn the arrangement of these substances, arrangement of these particles, and these particles are called subatomic particles. They are called subatomic particles. Atom के particles हैं, that is why they are called subatomic particles. Understood? Now, in the introduction, they have simply explained what they have taught in chapter 3. All those points are there. What makes an atom, one element, different from the atom of the other element. They have given the detail of this Dalton's theory. And this all we have learned. So a major challenge before the scientists at the end of the 19th century was to reveal the structure of atom as well as to explain the important properties. Like electrons कहाँ होते हैं, न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स कहाँ होते हैं, मेन मास एटम का किससे बनता है, देन उनका जो अरेंजमेंट है वो कैसे है. So there were many other questions which were there and that scientists were supposed to answer. On the basis of the first indications, atoms are not indivisible. So from here itself we come to know that atoms are not indivisible. Atoms can be divided, and when the atoms are divided they give us at least three things, that is electrons, protons and neutrons. So what are these charged particles? ठीक है. सो अ फ्यू एक्टिविटीज़ जैसे कि रबिंग ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स. आप लोग जब छोटे थे तब आप लोगों को समझाया गया होगा कि हेयर में कॉम्ब रब करने से कॉम्ब को में पेपर बिट्स अट्रैक्ट हो जाते हैं. सो दैट सिंपल फिनोमेना वाज डिराइव्ड बाय स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. तो ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है, उस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे दिमाग में आए. एंड देन वी केम टू द कंक्लूजन दैट द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय नोइंग दैट द एटम इज डिविजिबल एंड कंसिस्ट ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स. Many scientists contributed in revealing the presence of the charged particles in an atom. In 1900, the indivisible particle, but at least one subatomic particle, electron, was identified by J.J. Thomson. Now this is very important. आपको ये तीनों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसने किसने खोजा वो याद रखना पड़ेगा. किसने किसने ढूंढा वो याद. लाइक इलेक्ट्रॉन जो है वो J.J. थॉमसन ने ढूंढा. उसके बाद कुछ सालों के आसपास ही गोल्डस्टीन ने 1886 में नए रेडिएशंस के बारे में बताया था, विच वर नोन एज द कैनाल रेज. दिस रेज वर पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशंस एंड वर अल्टीमेटली लेड टू द डिस्कवरी ऑफ अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल विच इज प्रोटॉन. राइट. इस प्रोटॉन का जो देखो यहाँ लिखा हुआ है, एंड द नेम ही गेव प्रोटॉन. नाउ द चार्ज ऑफ प्रोटॉन, सी हियर इट इज रिटन, had a charge equal in magnitude but opposite sign of the electron. इलेक्ट्रॉन के जितना ही चार्ज but exactly opposite. तो we know electron is negatively charged, so the proton has to be positively charged. So E, electron was represented by small e and proton was represented by small p. But mass of proton was approximately 2000 times greater than mass of electron. 2000 times. मतलब
अगर एक इलेक्ट्रॉन का मास 1 यूनिट है तो प्रोटॉन का मास 2000 यूनिट है। समझ में आया? So as compared to the mass of electron becomes negligible compared to the mass of proton. So it seemed that atom was composed of protons and electrons and mutually balancing their charges. So it was said that atom is electrically neutral, क्योंकि एटम में जितने पॉजिटिव होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो जितने नेगेटिव चार्जेस होते हैं उतने ही पॉजिटिव चार्ज हुए. सो अल्टीमेटली दे बोथ विल कैंसल देयर इफेक्ट्स. ओके, so here are few questions. Its answers are already given on the page that we have studied. Then let us move to structure of atom.